Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. अगले दिन से ब्लड शेड कंटिन्यूअसली इतना सब कुछ हुआ. सुबह पाँच सेंट्रल जेल से कागरा बात कर मुलाकात करी से मगर मैंने बोला उसको ये हीरोइन है. उसने बोला हाँ ये ऐसे भी करते, ऐसे ज़्यादा चढ़ती है. Reduce our number of people as much as possible so that we sustain through this particular period of turmoil. Years of violence has traumatized a vast section of population in Kashmir. Cycles of unrest and lockdown have brought about a sense of hopelessness, pushing many into a state of depression. What exactly is the situation on the ground? Over the next half an hour, we'll deep dive into the subject to find out how exactly people are dealing with mental health issues. 55-year-old Hasina is suffering from acute depression since her 22-year-old son was arrested by the police days after revocation of Article 370 on August 5, 2019 and the imposition of a curfew and communication blockade in Kashmir. Every time Hasina speaks about her arrested son, she breaks down. She refuses to eat food and hardly talks anymore. A police party raided her house in South Kashmir's Shopian district. They were looking for her son Uzair, who was arrested the next morning for anti-national activities when he went to the police station. He has since been moved out of Kashmir to a jail in Agra. The protracted conflict in Kashmir has already taken a huge toll on the mental health of the people, with health experts calling Kashmiris a traumatized population. According to hospitals in Srinagar, people are now showing increased signs of anxiety and increasingly self-medicating with antidepressants. Sarsi pansi cham rasara yasan dan chwai busala bi hama wini yet ni ma yet garsi na er bagas tam sini jamara danal maiti bi achum kos kotnechu nim zachta mis jetiman patas chum zamai bagas kav lagit gasas dal maiti rat wani cham partna somos batcha savan sharam Go tampet. no mol has karis tramala kat karis mol when the mani yet has trajek sari baso yor 10 लड़कों से मैं दिखता है बड़ा सारी तरह ये बसन की. Uzair has been charged under the Public Safety Act, a law enforced in Kashmir that allows a person to be detained for up to 2 years without a trial. Human rights groups say the security forces arrested scores of Kashmiri youth like Uzair since August 2019, but most were later released. A heart patient, Hasina, is now showing signs of depression-induced sleeplessness, anxiety, and high blood pressure. Uzair was the main breadwinner of his family of 4 who worked as an assistant to a contractor before his arrest. His father, who is a driver, traveled to Agra to meet Uzair thrice in the last 1.5 years. A demoralized Hasina said after she spoke with her son over the phone, she thought of jumping from the roof of her house. hospital. Go to hospital? You it is. Shipping?
क्या चुना डॉक्टर पाने से तो Kawan harus dawa, namun harus bermurah dasar ni wapas. Kahar takli. Ratas tu jas nisrangan tu kan jas asan dog tu ratas tu sonchan tu hanti das tu sonchan tu hanti. According to health officials, depression among Kashmiris is manifesting more and in different forms. People show panic like symptoms, they overreact to normal situations. There is increased heart palpitation, angry outbursts, shivering, sleeping disorders, irritability, and a sense of uncertainty, with people constantly worrying about their future. Doctors say the capability to cope with trauma varies from individual to individual. Those who are traumatized for the first time are in a better position to cope with it, but the coping mechanism gets weakened for those subjected to a series of traumatic experiences. Doctors say the number of patients showing signs of depression and anxiety have increased drastically. See, conflict anywhere in the world, because we understand that we have lost so many lives on the either side of the line, be it a civilian or it be paramilitary or be it anybody for that matter, losing a life, that to a valuable life, to this conflict, and you understand what happens to the family. How do they cope up? Some family has lost their only bread earner. So you try to understand that, God forbid, if somebody dies of conflict or other related issues in our family, what happens? It devastates a family. So there are people who cope up very nicely. They say that it's Almighty's wish and will. We cannot do anything about it. But there are families, particularly whose only bread earner has either died or has been, God forbid, paralyzed, or his leg is amputated, or his eyes have been somehow, there have been problem with his vision. People who have a previous history of depression are vulnerable to relapses. Among those showing signs of depression are students who stopped going to the schools and colleges after the lockdown was imposed. Older people are becoming addicted to TV news, while younger people and children are addicted to games on their mobile phones and other indoor games. Health officials at hospitals say the increased cases of anxiety are leading many to buy antidepressants without prescriptions and other anti anxiety medications. Stress releasing medicines are much in demand, while there has been a spurt in the cases of depression in Kashmir in the last 2 years. According to 2015 survey by Medicine Sans Frontiers, 45% of the adult population of Kashmir showed signs of mental distress, 41% of them showed signs of depression, 26% showed signs of anxiety, and 19% showed probable symptoms of post-traumatic stress disorder. According to mental health experts, the real impact of the lockdown and communication blockade on the mental health of people will take some time to manifest fully. Doctors believe the number of cases of depression reported are only the tip of the iceberg. Thousands have been killed in Kashmir since militancy erupted in early 90s. Scores of protesters also died in police firing during the cycles of unrest in 2008, 2009, 2010 and 2016. This 21-year-old was extremely disturbed by the unrest of 2016 that followed the killing of Hizbul Mujahideen commander Burhan Wani, triggering a 5-month-long unrest that left 93 civilians dead and more than 15,000 injured. She says the unrest took a heavy toll on her mental health, leading to depression. She became scared and delusional.
But support from her family and a prompt medical intervention helped her to see through the crisis and recover from her depression. But she used to suffer from bouts of anxiety for a couple of years, even after she recovered, whenever violence flared up in Kashmir. In 2016 जब टर्मोइल स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे पहले दिन तो ऐसे मतलब सडनली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. अगले दिन से ब्लड शेड कंटिन्यूसली इतना सब कुछ हुआ. फिर इंटरनेट बंद हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा था वो सब कुछ. उसके साथ साथ जो रोज़ पैलेट्स से उसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, तो उस सब में पॉसिबल नहीं था कि खुद को उससे आइसोलेट करे. हालांकि मेरे साथ तो पर्सनली कुछ नहीं हुआ. ऐसा इंसान सोचता है कि अगर इसके साथ हुआ तो क्यों हुआ, और कल को हो सकता है मैं इसकी जगह हूँ तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है. प्रॉब्लम ये था कि दिमाग में वो बार बार स्ट्राइक हो रहा था, क्यों 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 ऐसा हो रहा है. मतलब मैंने कुछ किया नहीं, मैंने इतना सब कुछ देखा, अब एक नॉर्मल सी लाइफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम फिर से. उस चीज़ के लिए कुछ तो हमने किया नहीं, ये कल को फिर से होगा, और फिर ऐसा हुआ भी, आज तक हो रहा है. लेकिन वो चीज़, वो जो एक दिमाग में एक बात आई, वो डेवलप होती गई टू द एक्सटेंट कि एक दिन मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है. फिर डॉक्टर के पास आना पड़ा. तो किसी तरह से कभी कुछ इस तरह से होता है कि हालात फिर से ख़राब होते हैं, तो आपको एक बार फिर से ठीक नहीं लगता है ऐसे? हाँ, इनिशियल ईयर्स में आफ्टर 2018 मुझे ऐसा लगता था कि कहीं पर कुछ हो जाता, हालात ख़राब हो जाते. मुझे बिल्कुल वो अटैक जैसा आता था. मैं वो नहीं कूप अप कर पाती थी. मतलब मुझे लगता था कि फिर से मैं 2016 में चली गई, फिर से अब वही सब कुछ हो रहा है, फिर से कोई मेरे सामने मर गया, फिर से वही सब कुछ हो रहा है. तो वो चीज़ बड़ा मुझे उस टाइम पे प्रॉब्लम कर रही थी. मैं कूप अप ही नहीं कर पा रही थी किसी चीज़ के साथ. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे आज अब अगर कुछ होता भी है तो मैंने अपने दिमाग में ये सोच के रखा है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसका ये ऐसे ही चलता रहेगा. कॉन्फ्लिक्ट एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं. इसमें अभी इससे भी ज़्यादा बुरा हो लोगों के साथ, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. हमें अगर कुछ चाहिए, अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो उसकी एक प्राइस होगी जो हमें देनी होगी. मतलब मैंने अपने दिमाग को अब खुद ट्रेन कर लिया है कि ऐसा सब कुछ हो सकता है. आप अभी भी दवाइयाँ ले रहे हो या आप सब लोग? ऐसे तो मैं मेंटली बहुत स्टेबल हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेडिसिन्स जो होती है, जो साइकोटिक मेडिसिन्स होती है, ये आप सडनली फिर छोड़ नहीं सकते हो, आपको लेनी पड़ेगी. फिर स्लोली जब तक आपका डोज कम होगा, ये आपको लेनी है. ये कोई ऐसा नहीं है कि सर दर्द हो रहा है, खाया तो फिर ठीक हो जाएगा. यू हैव टू टेक इट. अच्छा, आपकी फैमिली का, सोसाइटी का, बाकियों का किस तरह से आप क्या अप्रोच रहा? क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान थे, सडनली आपको लगा कि दबाव पड़ गया आपके ऊपर, जो भी है हालात हुए, तो उसके बाद मतलब 3-4 साल हो गए, किस तरह से आप देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब बहुत कोऑपरेटिव है. मुझे किसी ने कभी कुछ नहीं कहा. लेकिन हाँ, लोग तो कहते ही है, लोगों में पता नहीं क्या क्या बातें होती है कि क्यों हुआ, डॉक्टर के पास क्यों गए, क्या मसला था. लोगों का तो ऐसा ही होता है, लेकिन उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है. Many in a region exposed to a heavy dose of violence have turned to religion to draw solace. A strong network of Baitul Mal or Islamic charities in Kashmir has been helping the needy. Many charities are collecting donations and funding medical emergencies of those who cannot afford to pay. Religious shrines like the Khanqa Mola and Hazrat Bal in Srinagar are among the few spaces that provide a calming atmosphere to the bruised population. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ خۄدا صٲبُن اَکھ جاے کہِ الا بِذِکرِ اللہِ تطمئن القلوٗب اگر تُہۍ یَژھان چھُو دِلَن منٛز قرار اطمینان تیٚلہِ چھِ اَکٲے سۄ وٲحِد جاے آسان کہِ یِمَن جایَن گژھُن ییٚمہِ سۭتۍ سانٮ۪ن دِلَن چھُ اَکھ سکوٗن میلان کانٛہہ چھُ آسان ڈِپرٛیشَنَس منٛز کانٛہہ آسان پریشٲنی منٛز اَمہِ وظیٖفہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس امیٖرِ کبیٖرَن اَسہِ دیُتمُت چھُ کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَکھ سکوٗن میلان اَمہِ سۭتۍ چھُ اَکھ قرار میلان یِہوے سبب چھُ لُکَن چھِ اَتھ کُن زیادٕ اَکھ رُجحان لوٚگمُت یَتھ جایہِ کُن تہِ یۄس مشہوٗر جاے وٕنکٮ۪س یِوان چھِ ڈاوُن ٹاونَس منٛز تہِ ماننہٕ اَسہِ Basic coping mechanism at our place historically has been religion. We take refuge in religion, be it 2005 earthquake, be it 2014 floods that is not far away, just 6 years back we had. And we had a beautiful display of communal harmony at our place that Muslims would be in the temples, they took refuge in gurdwaras, and the Sikhs took refuge in the mosques. That is beauty of Kashmir, that we have harmony to and diversity as well as harmony to that extent. And I think religion has been a very big coping mechanism that way to counter the stress-related issues at our place. The shutdowns in Kashmir have given a big jolt to its economy. The lockdown following the abrogation of Article 370 and the coronavirus pandemic has impacted life and livelihoods. Tourism, handicrafts and horticulture that provide a livelihood to thousands in Kashmir were the worst hit. Thousands of tourists, migrant workers and students fled Kashmir in utter panic after government issued advisory urging outsiders to leave Kashmir just 2 days before Article 370 was revoked. The exodus of tourists and the blocking of phones and the internet dealt a blow to Kashmir's economy. Hundreds of artisans, cab drivers, retailers and private sector workers grappled with the loss of livelihood in the aftermath of the abrogation of Article 370. Students couldn't attend college and schools due to restrictions for months. According to the preliminary economic assessment loss report released by Kashmir Chamber of Commerce and Industries in December 2019, Kashmir's economy suffered a loss of close to 18,000 crores and round about 5 lakh jobs were lost between August and October in 2019. The report said tourism took the biggest hit. Scores of cab operators in Kashmir were without work for months since August 2019. Long spells of shutdown and communication blockade was bad news for startups and entrepreneurs like Saeed Ashfaq, a financial analyst based in Srinagar. He says in 2019 he paid salaries to his 15 employees without work for 3 months with the hope that the situation would improve. A year later, he has moved to a smaller office with only 3 employees. So if you talk then, yes, the business was kind of, we were already coming out of a turmoil of 2016, then 2016 onwards, number of turmoils considerably. But eventually, the moment 2019 turmoil happened, that was the internet shutdown. Complete shutdown of internet, because our business was totally dependent on internet. We had to kind of close it down. So we had to retrench the employees, we had to kind of consolidate our operations, we had to kind of lessen our spaces. We left, our office space was somewhere around that moment of time 1600 square feet. Now we are kind of holed up in a space of 300 or 250 odd square feet now. So as of now, me as a businessman, I am not able to, me as an entrepreneur or a businessman, I am not able to take a decision whether I should invest further, whether I should take on, I should kind of get more staff to work. Small businessmen are already affected, but what you can do from business, it is a kind of step-by-step process. Step-by-step process for me, if I have said, let us say I started with an investment of, let us say 10,000 rupees, I am doing good. So what will happen? Eventually it will grow bigger. I'll start investing more, I'll start getting more employees. So that kind of psyche is not there. Right now we are kind of trying to consolidate and see how we can kind of manage our businesses.
A general sense of hopelessness has pushed a big chunk of Valley's youth to drug addiction. Hardly a day passes when police doesn't put out details of drug peddlers and narcotic substances recovered from them. This 22-year-old from South Kashmir has been a chronic heroin addict since last 6 years. His condition worsened since he lost his father to a road accident last year. He says drug addiction is widespread in Kashmir, and addicts like him are ready to beg, borrow, or even steal to get their dose of daily drugs. जो चरस है ना सर, चरस यूज करते थे और क्या करते थे सर बस उसके बाद आपने फाइल स्टार्ट किया? जी सर। अच्छा, तो कितने टाइम दिन में फाइल करते थे? 2-3 फाइल करते थे। 2-3 बार करते थे। तो फिर कब से, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके कितने टाइम के लिए बेटा आपने फाइल की? लगभग तकरीबन 2-2.5 साल की। 2-2.5 साल। जब हम गए मैंने एक को बोला वहाँ पे ऐसी चीज़ लेना था मुझे, वो कहाँ पे मिले? उसने बोला फलानी शजा, तो वो मिलेगा वहाँ पे ढाबे पे। जब हम गए तो लिया हमने वहाँ से, इसी के साथ लत लग गई। फिर हम विंटर्स में जम्मू जाते। जब मैं जम्मू गया तो वहाँ पे गुजर नगर में हम गए, गुजर नगर वहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलने जाते थे। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे सरदार एक था वहाँ पे। जब सरदार एक था वो गया साइड में और बैठने लगा अलग। उसने निकाला सिरिंज और रखा, उसके बाद चम्मच भी था, सिरिंज भी था। वो करा तो कुछ, मगर उसने वो ही डाला उस पर। मैं आया पीछे से, मैं देख रहा था इसको। मैंने उसको सिरे बोला ये क्या है? इससे बोला, मैंने बोला उसको ये हेरोइन है? उसने बोला हाँ। मैंने बोला उसको ये तो ऐसे करते। उसने बोला ये ऐसे भी करते, ऐसे ज़्यादा चढ़ती है ये। हमने उठाए 5 रुपये और दे इसको। बोला थोड़ा सा हमें भी। इसने खुद बना के दिया हमें, इसने खुद बना के। आहिस्ता फिर इंजेक्शन की लत लग गई आपको। तो डेली कितना एक्सपेंडिचर हो जाता है फिर आपका, मतलब दिन का जो आपका मामला रहता है, कितना पैसा लगता है दिन में? तो ऐसे लगते थे हमको, अगर 3 लड़के होते थे 1500 भी, 200, 1000 भी। चोरी इसमें करनी ही करनी है, डाका इसमें डालना ही डालना है सर। जब इसकी तोड़ लगती है ना, जब पैसे नहीं हाथ में आते हैं सर, इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। जो ये नशा है ना हेरोइन सर, इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है खाली इस नशे में। क्यों? इसमें किसी को चीज होती है, सर किसी को हो गया तो क्या हो जाता है? सर इसमें दिखता ही नहीं है कुछ, क्या आगे क्या होता है। फिर बहन है, माँ है सर। इससे पहले जब मैं कभी कभार छोड़ता था तो घर वालों की मर्जी से छोड़ता था। घर वाले ज़बरदस्ती लेते, पकड़ के लेते थे डॉक्टर के पास या रख पाते थे किसी के पास। आज अब पापा भी नहीं रहा तो सब बात भी नहीं कर रहे अच्छी तरह से। कोई भी जो भी कर रहा है मजबूरी से कर रहा है बात, दिल से बात कोई नहीं कर रहा है। और अब घर वालों का है ही नहीं कुछ, अब मामा भी नहीं, कोई भी नहीं। अब इनका भी सोचना है, इसी वजह से। तो जब आपने छोड़ दिया, मतलब आपकी ये कभी या इससे पहले दवाइयाँ बंद होती थी या अभी कल से दवाई बंद हुई है आपको, तो आपको क्या महसूस हो रहा है उस टाइम? क्या होता है आपको, क्या लग रहा है उस वक्त? बॉडी में क्या चेंज आ जाती है? सर जब हम वो करते थे, जब नशा करते थे सर, हाल होश कुछ नहीं रहता था। जब कल से मैंने छोड़ा सर, और सर फ्रॉम यस्टरडे समय विलिंग था मैं ये छोड़ूंगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई वो नशा और दवाई जब बंद हो गई आपको? सब जिन दिनों मैंने छोड़ा था सर, बहुत कुछ सर। मैं अगर घर वाले मुझे अंदर रखते थे सर, मैं खिड़की से भागता था, ऐसा होता था। क्यों, क्या होता था? ऐसी क्या चीज़? सर तलब लगती थी, बहुत ज़्यादा तलब होती थी, बहुत ज़्यादा सर। पसीना पेट में दर्द, पसीना आता था। और जो ये तोड़ है ना सर, इसकी तोड़ बहुत गंदी है सर। इंसान सोचता है इससे बेहतर मरना ही मरना है। It's clear that the situation is alarming. Steps need to be taken to reverse the trend to heal the suffering people. That's all we have in the show. Thanks for watching.
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to MOJO Story and support independent, robust journalism.